Ever wondered why we suddenly crave chocolates late at night या फिर सडनली कभी कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग होती है? ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये आपके बॉडी के सिग्नल्स हैं. Let's try to decode what your food cravings are really trying to tell you in a scientific term but in simple language. Hi everyone, I am Kinjal, a qualified nutritionist, and on this channel we simplify nutrition and lifestyle ताकि आप अपने हेल्थ के लिए स्मार्टर चॉइसेस ले सकें. So let's dive into today's interesting topic, which is food cravings and what they actually mean. Let's quickly understand what are food cravings. Food cravings are those intense desire to eat specific food which is usually high in fat, salt or sugar. What is the scientific reason? Your brain's reward system. Especially the dopamine gets activated by such foods. But cravings are not just emotional signals, they can be nutritional signals from the body. अक्सर हमें बॉडी सिग्नल देती है और हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं विथ टेस्ट एंड क्रेविंग्स. नंबर 1, क्रेविंग्स फॉर चॉकलेट. अगर आपको बार बार चॉकलेट की क्रेविंग्स होती है, दिस कुड मीन अ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. मैग्नीशियम जनरली हेल्प्स विद मूड रेगुलेशन एंड एनर्जी. और अब जैसे ही हम चॉकलेट खाते हैं उसमें शुगर की वजह से हमें एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड. तो आपको लगता है कि चॉकलेट खाने की वजह से ये इम्प्रूव हुआ है, बट ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है बिकॉज what we actually need is not present in high sugary chocolates. Instead, you should start taking nuts, seeds, leafy vegetables and bananas in your regular diet so that your magnesium deficiency is reduced. Occasionally, you can take dark chocolate, a little piece. Number 2, cravings from salty food, something like chips or namkeen. Salt cravings often indicate electrolyte imbalances in the body, or it could also mean stress. जहाँ से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, वो ग्लैंड विच इज़ एड्रीनल ग्लैंड demands for higher salts when we are in stress. So instead of going for such salty namkeens or chips, try taking a glass of lemon water with a pinch of salt. You can also start including potassium-rich foods in your diet like coconut water and bananas. Third is mithai or sweets. It can be a result of low blood sugar, poor sleep or emotional eating. कभी कभी दिमाग comfort food मांगता है जब हम इमोशनली लो फील करते हैं. सो फॉर दिस यू कैन ट्राई बैलेंसिंग योर मील्स विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड ट्राई टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours. इट कैन ऑल्सो मीन द स्टार्टिंग ऑफ डायबिटीज़ बिकॉज इनिशियली जब हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, द इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. दैट इज़ वाई द शुगर, द एक्चुअल ग्लूकोज इज़ नॉट entering inside the cell, which might create a feeling of frequent hunger or you don't feel full. It is not that your stomach is not full, but actually the glucose is not entering inside the cell and that is why you crave for sugar. Fourth is craving for fried foods. Now this can be linked to essential fatty acid deficiency or it is just out of habit. Try including healthy fats like olive oil, walnuts, almonds, flax seeds to curb this craving. Fifth is craving for ice cream or cold items. It is often termed as pagophagia. ये एक unusual craving है and this can indicate iron deficiency. More common in women, but it can also be present in men. You better go and check your hemoglobin level and consult your doctor. Now let's talk about emotional versus physical craving. Ask yourself, am I really hungry or I'm just bored or stressed? A physical hunger is building gradually and it can be satisfied with any kind of food. Whereas emotional craving is sudden, specific and often comes with guilt later on. Emotional eating को समझना ज़रूरी है और उसका solution है mindful eating. So how do we manage these cravings? Eat balanced meal with good carbs, proteins and fats, and most importantly maintain your meal timings. Second is most important, stay hydrated because sometimes thirst can mimic hunger. Sleep well because sleep deprived brains can crave junk food. Practice mindfulness. Ask yourself, why do I want this particular food?
एंड डोंट डिप्राइव। आप अपनी क्रेविंग को कोई स्मार्टली ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ फुलफिल कर सकते हो। सो इन दी एंड सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपकी क्रेविंग्स आपसे कुछ कहना चाहती है, उसे सुनिए, समझिए एंड करेक्ट स्टेप्स लीजिए। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद समवन जो हमेशा फ्रिज के आसपास मंडराता है अपना फेवरेट फूड ढूंढने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल टॉक्स अबाउट न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। Comment below which craving do you struggle with the most. I will reply with my tips personally. This is your nutritionist Kinjal signing off for now. Until next time, eat well, stay mindful and keep glowing from within.